of both demand side and supply side factors of inflation. So modern theory of inflation shows that inflation is caused by both demand side as well as supply side factors, and it is and the change in demand side and supply side is because of can be because of all the factors. It can be because of real factors, it can be because of monetary factors. So basically modern theory is a synthesis of all the theories. It consider all the factors which can contribute in the inflation, जो inflation में contribute कर सकते हैं. Generally we divide the inflation into two types: demand pull inflation, where certain factors like monetary factors or real factors, they increase the demand, and because of that there is occurrence of inflation. And second kind of inflation is cost push inflation. In cost push inflation, like because of increase in wages, because of increase in cost of production, because of increase in profit, because of all these factors, if there is increase in the cost of production, it affects the supply. ये supply को affect करता है, and this leads to increase in inflation. So according to modern theory, both these kinds of inflation are both these types are responsible for generating inflation in the economy, whether that is demand pull inflation or that whether that is cost push inflation. And it is very difficult to segregate that how much contribution is done by the demand side inflation and how much contribution is from cost push inflation, because they interact with each other, with दूसरे के साथ interact करती हैं, and in a combined manner they generate inflation in the economy. Combined manner में inflation generate करती हैं, right? Now first of all we will take the demand pull inflation, that according to modern theory there is demand pull inflation. Now demand pull inflation basically gets generated when there is increase in aggregate demand, and as a result of that there is increase in prices, then that type of inflation is known as demand pull inflation. Now demand pull inflation can be caused by monetary factors as well as by real factors. दोनों ही इसको create कर सकते हैं. First of all we will take the monetary factor according to modern theory. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिफरेंट फैक्टर्स, उन्हीं को बेसिकली हम यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी में कंबाइन कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. तो फर्स्ट इज द monetary factor. Because of the monetary factors, if there is increase in money supply, monetary factor takes that it is the money supply basically which creates the problem of inflation. So if there is increase in the money supply and output does not increase with the same rate as money supply increases, then it creates the problem of inflation. ये inflation का problem जो है create करता है. I'm just sharing my screen because there are few diagrams in this. Like for example, here we take effect of monetary factors can be shown with the help of a diagram, right? So this is suppose IS curve and this is LM curve, and here it is equilibrium in the economy. Economy में equilibrium exist कर रहा है, and suppose this equilibrium in the economy is at full employment level. अगर full employment, अगर हम less than full employment भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम full employment level ले रहे हैं. And suppose this is the aggregate demand, ये aggregate demand है, and this is the aggregate supply at Y0 level of output in the economy, and where aggregate demand is equal to aggregate supply, this is the general price level in the economy. P0 is the general price level. Here it is rate of interest, and here we take income
or output level on this side, right? Now suppose if there is increase in money supply, due to increase in money supply, LM curve will increase from LM1 to LM2, and due to this we can see that output will increase from Y0 to Y1. But at Y0 is the level of full employment, so this increase which is required by the equilibrium cannot be increase in the economy, because Y0 is already a full employment level. So this required increase, जो required demand है, which has increased from Y0 to Y1, this will increase the prices only, because this gap will convert into increase in prices increase हो जाएंगे. So rather than increase in the output, there will be only increase in prices. So Y0 YA जितना output required है, so due to this shift from LM1 to LM2, aggregate, because of more money supply, aggregate demand will increase from AD to AD1, but rather than the increase in output, there will be only increase in prices from P0 to P1, because Y0 is the level of full employment. So Y0 Y1 is representing the required level of output, which cannot be increased because of the constraint or full employment. That then whole of this increase in money supply will get converted into increase in prices increase हो जाएंगे. So this is the effect of monetary factor, and this is how monetary change in money supply results into the increase in prices को increase करता है, right? Then this is under demand pull inflation. So demand pull inflation due to monetary factors. Then next is the demand pull inflation caused by real factors, right? So first we have discussed there are two things. One is demand pull inflation and cost push inflation. Under demand pull inflation, monetary factors are also responsible for demand pull inflation. Then real factors are also responsible for demand pull inflation. Now, as far as the real factors is concerned, like for example, if there is increase in government spending, अगर government expenditure increase होता है, this will raise the level of income in the hands of the people because of the increased government expenditure, and demand will increase. जो demand government expenditure अगर हम normally government expenditure ले रहे हैं, if there is increase in government expenditure, there will be increase in aggregate demand. If there is increase in autonomous investment, that will also increase the aggregate demand. If there is downward shift in the saving function, that means if the saving function reduces, then consumption will increase. Due to that also aggregate demand will increase. जो aggregate demand है वो increase होगा, right? If there is upward shift in the export function, if export function increases, then more income will comes in the hands of the people through exports, and due to this also there will be increase in aggregate demand. जो aggregate demand है वो increase होगा, right? And if there is cut in the tax rates, taxes जो है अगर वो government cut down कर देती है, this will increase the disposable income in the hands of the people, and people will start demanding more goods and services. These are few examples of real factors, that if there are change in the real factors, if there is change in policy, if there is change in expenditure, there is change in saving, there is change in consumption, then all these factors will affect the aggregate demand को affect करेंगे, and due to that there will be inflation. जो inflation है वो exist करेगी. Is that clear? मैम ये IS वाले फैक्टर्स है ना? ये IS वाले फैक्टर्स, yes. इसी चीज को अब हम डायग्राम फॉर्म में दिखाते हैं, राइट? मॉनेटरी फैक्टर्स जो हैं वो LM को इफेक्ट करते हैं, और जितने भी रियल फैक्टर्स हैं वो IS को इफेक्ट करेंगे, राइट? अब हम सेम चीज यहाँ पे शो करते हैं. सपोज दिस इज आवर IS कर्व, ये हमारा IS कर्व है, एंड दिस इज LM. Due to any of these real factors, if there is increase in aggregate demand, then IS curve will and this is suppose existing level of output, and here we take the rate of interest, and due to any of these factors, if there is
there is increase in the aggregate demand, then IS curve will shift in the outward direction. जो IS curve है, it will shift from IS0 to IS1. Because of that, the equilibrium level of output will be Y0 to Y1. And suppose this is aggregate supply curve. ये हम aggregate supply curve ले रहे हैं. And earlier equilibrium was at, और यहाँ पे हम ले रहे हैं equilibrium was at Y0. So this is the aggregate demand equal to aggregate supply at Y0 income level, and the level of prices in the economy, level of general prices in the economy is P0. And due to increase in aggregate demand, IS curve, due to change in the real factors, aggregate demand has increased from AD to AD1, and due to this shift, equilibrium has shifted from E0 to E1. Because this is less than full employment, हम less than full employment ले रहे हैं. Even in case of less than full employment, because demand has increased more, but output increase rate of increase in output is lesser, कम है. Due to this, we can see that output has increased from Y0 to Y1, but prices has also increased from P0 to P1, simply because the aggregate demand has increased more as compared to increase in supply. So due to this, there will be increase in prices from P0 to P1. But if अगर Y0 को हम full employment situation लेते, then whole of the change will get converted into increase in price level. There would have not been any change in the level of output. Is that clear? Yes, ma'am. So this was the effect of real factors. So according to modern theory, demand pull factors are responsible for inflation, whether those are monetary factors or whether those are real factors. Both are responsible for inflation. दोनों ही inflation के लिए responsible है. Second हमारे पास आती है. Excuse me, ma'am. हाँ मैम जी, वो जो हाँ जी. प्रीवियस डायग्राम में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाया था वो भी इंक्रीज हो रहा है ना? हाँ, वो भी इंक्रीज हो रहा है ना, वो भी इंक्रीज होगी R1, क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, राइट. एंड जो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड है वो भी इंक्रीज होगा. बिकॉज ऑफ दैट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज इंक्रीज फ्रॉम R2 R1, राइट. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा. जैसे हमने सपोज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया. अगर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, दैट मींस गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग मोर फंड्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट. ड्यू टू दिस, the demand for investment has increased. Because of that, the rate of interest has increased from R2 R1. Okay, ma'am. Right? So next हम लेते हैं cost push inflation. Cost push inflation हम ले रहे हैं. First was the demand pull inflation, then is the cost push inflation. Cost push inflation basically again caused by the changes in the supply function. अगर supply function में जो cost है, that changes the supply function. अभी हमने क्या, there was change in the demand function, because of that there is inflation. Cost push inflation changes the supply function which creates inflation, जिसकी वजह से inflation होती है. Now the cost push inflation can be due to change in various factors which leads to change in the cost, जो cost को change करते हैं, right. And many a times it has been seen that because of the existence of the imperfect type of a market, like for example, there is existence of monopoly power, there is existence of minimum wage legislation, because of existence of administered prices, the cost push type of inflation exists in the economy. So if we broadly categorize the different factors which results into cost push inflation, so we can categorize them into three categories. हम तीन categories में इनको divide कर सकते हैं. One is the wage push inflation,
कि अगर वेज की वजह से ये हो रहा है, so one factor we can say that cost related inflation can be because of wage push inflation. Secondly, it can be due to profit push inflation, profit की वजह से ऐसा हो रहा है. And thirdly, it can be due to supply shock. Supply shock inflation भी जो है वो exist करती है, and these all factors affects the cost of production. ये cost of production को affect करती हैं, and cost of production affects the supply, supply को affect करती है, and because of that inflation gets generated. जो inflation है वो generate होती है. So first is the wage push inflation. Wage push inflation basically caused by the existence of strong labor unions, because there is monopoly power of labor unions. Because of those labor unions, through pressure, enhance increases their money wages over and above the competitive level, irrespective whatever is their productivity level. And sometimes because of the pressure of labor unions, wage rate increases more without any increase in the productivity of labor. Labor की productivity में कोई increase नहीं हुआ है, but the wage rate starts increasing because of the pressure of the existence of labor unions. This creates the cost push inflation. ये cost push inflation को create करता है, right? So level of productivity is not matching with the level of increase in wages. This will result into inflation. ये inflation create करता है. Sometimes because of the minimum wage legislation also, right? Wages cannot be reduced according to the requirement, and minimum wage legislation is basically governments fix the higher wage rate, then also this type of a wage push inflation gets created. ये wage push inflation जो है ये create होती है. Like due to this what happens, we can show it with the help of a diagram. इसको हम diagram की help से show कर सकते हैं. Like for example, let me make 2 diagrams over here. Just a second. Okay, so यहाँ पे हम ले रहे हैं, this is suppose aggregate supply curve, right? And this is original aggregate, initial aggregate demand curve and initial aggregate supply curve, and this is the level of output which is at suppose Y1's level, and this is the level of prices where aggregate demand is equal to aggregate supply, and this is the level of prices. On these prices, suppose this is the initial level of money wages. ये money wages का initial level है, and money wages divided by prices gives us the real wage. हमें ये real wage दे रहा है, which is at R1 level, वो R1 level पे है, right? And at this R1 level, अब ये R1 level exist कर रहा है हमारे पास, that means real wages are at R1 level. So demand for labor, which is demand for labor, is equal to supply of labor on this, but ये initial situation है. On SL level, SL is the supply of labor, DL is the demand for labor, R1 is the this is real wage. यहाँ पे हम ले रहे हैं real wage, and this is level of employment. So where demand for labor is equal to supply of labor, this N1 is the level of employment which is existing in the economy, जो economy में exist कर रहा है. Now suppose what happens, because of, for example, because of the pressure of labor unions, the wage rate, this is the money wage rate, W1, ये हमारा money wage rate है, right? And suppose the level of wages increases in the economy because of the pressure of trade union or labor or due to any factors, money wages increase हो जाती हैं.
Because of this money wage rate will increase from W1 to W2, right? When these money wages will increase from W1 to W2, we can see over this there is increase in real wages from R1 to R2 because of increase in real wages. क्योंकि real wages हमारी increase हो गई है from R1 to R2, we can see demand for labor जो है इस particular case में, because real wages has increased because of the increase in money wages. This is the supply of labor, but the demand of labor is this much. So over here unemployment gap will get created, and now the level of employment will reduce from N1 to N2. जो level of employment है वो N1 से N2 हो गया. Just a second, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें एक साथ लेने की बजाय हमें प्राइस में इंक्रीज शो करना है. जस्ट अ सेकंड, इनको ग्राफ ठीक करना है, एक मिनट. ये हमने इसके साथ पैरेलल शिफ्ट कर दिया. जस्ट लेट मी मेक अ करेक्शन इन दिस. ओके, एक मिनट. दिस वाज आवर डिमांड फॉर, जस्ट अ सेकंड. This was our demand for labor. This was our supply of labor, and there is increase in wages. Wages has increased from W1 to W2, and because of this increased demand for, yes, let me explain this now. Now wages has increased from W1 to W2. जब wages increase होंगे W1 से W2, in that case cost of production will increase. जो cost of production है वो increase होगी. Due to increase in cost of production, the supply curve, पहले हम यहाँ पे supply curve change करेंगे. Because of increase in the cost of production, the supply of the commodity will start reducing. जो supply है वो reduce होना शुरू हो जाएगी, and we can see that due to this, the supply curve will start shifting in the upward direction. पहले हम supply curve shift करेंगे. Due to this, supply curve will shift in the upward direction because the cost of production has increased. When the supply curve will shift in the upward direction, we can see that aggregate demand is now equal to aggregate supply at this. पहले equilibrium ये था. Now this equilibrium has shifted from E to E1, and due to this upward shift in the supply curve, output will reduce from Y1 to Y2, and prices will increase from P to P1. Now on these new prices, which has increased from P0 to P1, and money wages are W2, real wages are R2. This is not R2. Real wages are R2. Now the real wages has increased because and output has also reduced. Because of that, the demand for labor will get reduced. जो demand for labor है वो reduce होगी, and it will reduced from N1 to N2. जो reduction है वो N1 से N2 हो जाएगा, and this much will be the gap between the supply of labor and demand for labor. So there will be unemployment in the economy, output will get reduced in the economy, जो output है वो reduce होगी, and there will be increase in the prices. जो prices हैं वो increase हो जाएंगे because increase in money wages has increased the cost of production. Because of increase in cost of production, aggregate supply curve will shift in the upward direction, and because of that shift in the upward direction, prices will increase and output will reduce. Is that clear? Excuse me, ma'am. Ma'am, could you Ma'am, please repeat the explanation of money this price, diagram? हाँ जी. ma'am, when money wages is increasing initially, so ma'am, aggregate demand increase only.
In this particular case? Yes, ma'am. अच्छा, you are saying that more demand, that वो हम करेंगे जब हम करेंगे कि interaction between demand and supply both will, yes you are correct, जब money wages increase होंगी तो उससे सिर्फ aggregate supply ही नहीं aggregate demand भी effect होगी, that is absolutely correct. but अभी हम क्या कर रहे हैं, हम दो parts में divide कर रहे हैं. एक में हमने purely किया कि purely demand पे effect आया, then this is how inflation will change. दूसरा हमने क्या, purely अगर cost side change आया, now we are not looking at demand side, we are only focusing if purely there is effect on the cost side, then aggregate supply curve will change, because of that inflation will come. In the end we will take the interaction between both, तो दोनों में ही इंटरेक्शन होगा कि कोई भी अगर चेंज आता है तो उसकी वजह से वेज चेंज होगा, वेज की वजह से एग्रीगेट सप्लाई चेंज होगी, एंड ड्यू टू दैट एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो चेंज. दैट विल बी नोन एज द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. वो इंटरेक्शन के अंदर हम करेंगे. ओके मैम, मतलब मैम अभी हम एडी को कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं. यस, क्योंकि हमें एडी में दिखाना. यस, हमने सिर्फ अभी प्योरली क्या दिखाना है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करती है. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वर्क्स फ्रॉम द एग्रीगेट सप्लाई साइड, ये एग्रीगेट सप्लाई साइड से वर्क करती है. बट एक्चुअली इन द इकोनॉमी all the factors work together and they affect demand and supply both together. Okay, right? So like for example अगर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कहते हैं कि यस जी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो कॉस्ट को इफेक्ट करता है, फिर वो भी तो पार्ट है कॉस्ट का, राइट? मतलब हमने स्प्लिट कर दिया, प्योरली दोनों साइड का इफेक्ट अलग अलग देखने की बजाय, और बाद में हम उनको एक साथ ले लेंगे. ठीक है मैम. ओके, राइट. सो दिस इज आवर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, राइट? ड्यू टू व्हिच इज मैम. हाँ जी, मैम ये R1 क्या, मैम R1 क्या दिखा रहा है? R1 दिखा रहा है रियल वेज. और मैम वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर आएगा फिर, आप बोल रहे थे? तुम नीचे, यहाँ पे नीचे आ जाओ ना, इस डायग्राम से इस तरफ नीचे की तरफ आओ, तो R1 पे डिमांड फॉर लेबर वाज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट था. यस मैम, राइट. बट अब आपका रियल वेज बढ़ गया R1 से R2, ये R2 आ गया. ड्यू टू दिस व्हाट हैज हैपेंड, अब नया डिमांड फॉर लेबर कितनी है, A डिमांड फॉर लेबर है, तो दिस इज शोइंग द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स. डिमांड एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो हमेशा डिमांड फॉर लेबर के अकॉर्डिंग होती है, तो दैट मींस जॉब्स कितने अवेलेबल है, N2. यस मैम, राइट. तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट से कितना गैप क्रिएट हो गया हमारा, दिस मच. और अगर सप्लाई ऑफ लेबर के साथ देखोगे कितना गैप हो गया, तो इस वेज पे सप्लाई ऑफ लेबर इज B, demand for labor is A, so this much is showing the gap between the supply of labor and demand for labor. तो previous level से हमारी ये unemployment आ गई, and in a current situation में this is the level of unemployment, right? और मैम ये जो हमने सप्लाई कर्व को वो किया था, डिक्रीज किया था मैम, हमने ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे इसको उस टाइम पे हमने मर्ज क्यों कर दिया, इसको हमने डिक्रीज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वाला पॉइंट, क्योंकि Y1 हम ले रहे हैं, इट इज द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये अज्यूम कर रहे हैं हम लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट? सो Y1 के बियॉन्ड जो है वो आउटपुट नहीं इंक्रीज की जा सकती, बिकॉज Y1 पे ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुली एम्प्लॉयड. मैम मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम नहीं हो जाएगा जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे? तो फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस उसी की वजह से तुम्हारा ये जो कर्व है ये अपवर्ड साइड शिफ्ट हो गया. तुम देखोगे मतलब पहले हमने उसको अपवर्ड शिफ्ट किया तो उसका जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा स्टेबल ही रहेगा. पहले देखो, पहले इस प्राइस पे ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रह गया, राइट, Y1. लेकिन तुम इसको अगर अपवर्ड डायरेक्शन में देखो तो तुम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज देखोगे. अभी Y1 को सीधा अगर ऊपर ले जाओ, यहाँ पे इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है उस पे चेंज आ सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि चेंज नहीं आता है, चेंज आ सकता है, क्योंकि अगर आप वेजेस या आप
वेज रेट इन सबको बढ़ाते हो, देन मोर पीपल विल बी विलिंग टू वर्क, ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लेवल ऑफ अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर मेकिंग द प्रोडक्शन दैट इंक्रीजेस। सो ये जो लेवल है ये आगे पीछे शिफ्ट होता रहता है, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे हम सिंप्लीफाइड अजम्पशन की फॉर्म में हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हमने Y1 लेवल जो है वो हमने एक लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एज्यूम कर लिया है, दैट इज अ सिंप्लीफाइड अजम्पशन, बट दैट डजंट मीन कि Y1 लेवल जो है वो चेंज नहीं होता है, दैट चेंजेस ऑटोमेटिकली। जितना ज्यादा हायर वेज रेट होगा, मोर पीपल विल बी विलिंग टू वर्क, अगर ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट भी इस साइड को शिफ्ट होता है, दैट शिफ्टिंग हैपेंस, राइट। बट इतना सारा हम यहाँ पे एक साथ शो नहीं कर सकते, तो फॉर अ सिंप्लीफाइड अजम्पशन वी हैव टेकन इन दिस डायग्राम कि Y1 इज द गिवन लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके मैम, राइट। और फुल एम्प्लॉयमेंट वो लेवल है वे डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, जहां डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर के इक्वल है। यस मैम, राइट। सो बेसिकली दिस इज द Y1। हमने जो हम इन डायग्राम्स में दिखाते हैं, हम पूरी रियल इकोनॉमी को डायग्राम्स में दिखा सकते हैं, बिकॉज रियल इकोनॉमी इज वेरी वॉलेटाइल, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, हर फैक्टर्स उसको इफेक्ट करता है, शिफ्ट्स होती हैं, राइट। कभी एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट है, देन बिकम्स नेक्स्ट लेवल ऑफ बिकम फुल एम्प्लॉयमेंट, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट चेंज होता रहता है बिकॉज देयर इज वॉलेटिलिटी। लेकिन हम उस वॉलेटिलिटी को यहाँ पे डायग्राम में शो नहीं कर सकते, हम एक सिंपल अजम्पशन के साथ यहाँ पे उसको डायग्राम में शो कर रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ इफेक्ट विल कम। यस मैम, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन है लाइक फॉर एग्जांपल sometimes what happen, in order to earn the more profit margins को enhance करने के लिए, like there is cartels among the firms के बीच में cartels हो जाते हैं, there's a situation of monopoly, there's a situation of oligopoly, right। इस तरीके की situations emerge करती हैं, and in that case generally the prices are not fixed by the market but prices are administered prices। जो prices होते हैं वो administered prices होते हैं। administered prices means prices are determined by the management of the firms, prices are determined by the group of firms, club of firms, but it is not determined by the market freely market इसको determine नहीं कर रहा है, partially it is determined by the market depending on that how much monopoly power is in the hands of the firms. If larger monopoly power is in the hands of the firm, then more power to fix the prices goes in the hands of the firm, right? And if there is lesser monopoly power with the firm, then lesser power to administer the prices are in the hands of the firm. And generally in case of when there is monopoly, oligopoly, these type of situations are there where there are large firms in the market or firms form the cartels. अगर firms cartels create कर लेती हैं, then they are the one who fixes the prices in order to maximize their profit. And for doing that, they control the supply. वो supply को control करती हैं, and due to that prices starts increasing in the economy. जो prices हैं वो economy में increase होना शुरू हो जाते हैं, right? So this type of inflation is known as profit push inflation. Profit push inflation होती है, and due to this aggregate supply curve shift in the upward direction because the supply is controlled by these firms. Deliberately they reduce the supply of their product so that the price can go at a higher level, and due to this their profit margin increases. जो उनके profit margin है वो increase होते हैं. This type of inflation is known as profit push inflation. तो इसमें भी हमारा same डायग्राम बनेगा जिसमें हम दिखाएंगे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, एंड इट इज डेलिबरेटली डन बाय द फर्म्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन्स. इज दैट क्लियर? मैम इसमें हम होर्डिंग ले सकते हैं मैम?
यस हाँ, होर्डिंग एनी रीजन, मतलब आप मार्केट में सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हो, या तो आप प्रोडक्शन ही रिड्यूस कर रहे हो। होर्डिंग तो होगा कि आपने प्रोड्यूस कर दिया बट आप उसको डेलिबरेटली मार्केट में जाने नहीं दे रहे हो, दैट बिकम्स ब्लैक मार्केटिंग, उसको हम ब्लैक मार्केटिंग कह देते हैं। इसमें क्या है, आप प्रोडक्शन ही जानबूझ के कम कर रहे हो। होर्डिंग तो मीन्स आपने प्रोड्यूस कर दिया, अगर आपने प्रोड्यूस कर दिया देन अगर आप सेल नहीं करोगे तो आप लॉस ले रहे हो, राइट। सो होर्डिंग, इसमें हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं कि फर्म्स डेलिबरेटली प्रोडक्शन ही कम कर रही हैं। अगर वो प्रोडक्शन ही कम कर रही हैं तो एग्रीगेट सप्लाई कब रिड्यूस हो जाएगा, एंड ड्यू टू दैट डिमांड फॉर लेबर विल आल्सो रिड्यूस, एंड डिमांड फॉर लेबर विल रिड्यूस, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल आल्सो कम। ओके मैम। राइट, क्योंकि आप प्रोडक्शन ही कम कर रहे हो। सो लेवल प्राइसेस विल इंक्रीज, प्राइसेस इंक्रीज होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी और इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ गुड्स विल आल्सो रिड्यूस। सो दिस इज नोन एज प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, इसको हम प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड जनरली largely it happens because of the existence of administered prices. Prices are not freely set up by the market forces, and deliberately it is done to increase the profit. So this is known as profit push inflation. Then comes the supply shock inflation. Supply shock inflation hoti hai because of the sudden and unexpected decrease in the supply of some major commodity or key industrial input, that type of a input which is used by the industry, and suddenly due to unexpected factors this supply suddenly reduces, then it increases the inflation. ये inflation को increase करती है, इसको हम supply shock inflation कहते हैं। Like for example, due to the bad rainfall, suddenly if some type of a crop is get reduced, production of some type of a crop get reduced which has been used by the industries as their major factor of production, as their major raw material, then the price of that factor will increase, वो input का price जो है increase हो जाएगा, and that will increase the cost of production, and that will negatively affect the aggregate supply, वो aggregate supply को negatively affect करेगा, right? Like in 1972 अगर हम देखें, in reality in 1970s due to Arab Israel war, there was a sudden increase in the price of the petroleum products या oil के prices में sudden increase आया था, right? Then in 1990s also due to the Gulf War, जो Gulf War हुई थी अमेरिका इराक के बीच में, because of that also, that war, there was a sudden decrease in the oil supply में sudden decrease हुआ था, because of that prices of oil has increased, and oil is a very basic input which is used for the production, for transportation, and it has caused inflation in many countries because of the sudden decrease in the oil supply. Then we can see many incidents like 1972-73 में इंडिया में crop failure हुआ था, right? So because of that the prices of goods and services has increased because agriculture provides a raw material to many industries. बहुत सारी industries को जो agriculture है वो raw material provide करता है, and there was a shortage of raw material, because of that prices has increased. So basically supply shock हम कहते हैं because of major input, because of a sudden reduction in the supply of major input or major commodity. When the prices starts increasing, it affects the supply negatively and prices starts increasing. That supply type of inflation is known as supply shock inflation. Is that clear? Ma'am, its intensity depends upon the elasticity of demand also. Yes, it intensity depends on the elasticity, or all the factors work together. Intensity depend करेगी कि कितनी elastic या inelastic है। अगर हम totally उसी good पे dependent हैं और हमारे पास कोई और substitute नहीं है, then automatically जो हमारी demand है उस product के लिए या firm की demand है उस product के लिए as a raw material, that will be inelastic in nature, right? But if there is a availability of substitute, अगर substitute की availability है, then firm can easily shift from that
टाइप ऑफ अ रॉ मटेरियल टू दी सब्स्टिट्यूट गुड पे शिफ्ट हो सकती है, देन इन दैट केस दी कर्व विल बी इलास्टिक, कर्व इलास्टिक होगा और सप्लाई पे जो इफेक्ट है वो कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि दूसरा सब्स्टिट्यूट यूज करके उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लिया जाएगा, बट स्टिल इफेक्ट होगा. Why? Because then all the firms who are using that particular product, they will shift to the substitute. Because of that, the prices of substitute will also start increasing little bit. Yes, ma'am. राइट. सो इफेक्ट थोड़ा बहुत आएगा. यस, इंटेंसिटी कितनी होगी वो इलास्टिसिटी इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है. ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा जर्क देता है, बिकॉज ऑयल के जो बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट हैं दैट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ. इवन अभी धीरे धीरे कार्स में हम इलेक्ट्रिक कार्स इन सब शिफ्ट हो रहे हैं, बट ऑयल इज अ वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में यूज होता है. तो ऑयल शॉक जो है वो मल्टीपल इकोनॉमीज को इफेक्ट करता है जब ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में इस तरीके का कोई भी सप्लाई शॉक जनरेट होता है. राइट. एक्सक्यूज मी मैम, कभी ऐसा तो नहीं होता बट कि जैसे अभी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड है इट इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, तो मैम इसके प्राइसेस स्टिल राइज हो रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि कम हो, मतलब बहुत ही रेयर होता है कि कम करें, इस टाइम पे तो कम ही होने चाहिए. कम होने चाहिए, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर सेइंग दैट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग जीडीपी रेवेन्यूज आर डिक्रीजिंग एंड एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड वेरी मच बिकॉज ऑफ द कोरोना प्रॉब्लम. सो दे आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन कि जो पेट्रोल में प्राइस डिक्रीज हुआ है वो, और लेकिन वो प्राइस हाई इसलिए रख रहे हैं क्योंकि दे आर कलेक्टिंग देयर टैक्सेस आउट ऑफ इट. उनकी टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा. जैसे जो पेट्रोल हम खरीद रहे हैं उसमें पर लीटर में 53 रुपीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट मतलब अपना टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं जो बाकी चीजों से नहीं आ पा रहा. यस, वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. इसलिए तुम देखोगे इस पे डिबेट भी बड़ा है कि लोगों पे भी तो इतना बर्डन है, उनकी इनकम रिड्यूस हुई है. आई हैव सीन पीपल हु वर अर्निंग 80-90,000, नाउ दे आर डूइंग द सेम जॉब एट 50-40,000. Right. So it is a debatable thing that the benefit should be passed on to people also, because they are also suffering from their income level and they are also losing their jobs. They are जो लोग business में हैं या professionals हैं, their clientele has reduced, their income level has reduced. So it is a debatable topic कि कितना इस चीज का जो benefit है वो government को लेना चाहिए और कितना pass on जो है वो लोगों पे करना चाहिए. Right. So and for that thing we have to study, we actually have to study that what problems are faced by the government and why they are not passing on the benefit to the people, and then we can say whether it is wrong or right. Right. Yes ma'am. And because we are not politician कि बिना पढ़े या बिना सोचे बोल दें कि ये wrong है या right है. Politicians do that. Yes, that is a bad thing for irony India ki, but they do this thing, right? So these were basically are according to modern theory. That means modern theory जो है उसने सारी चीजों को एक साथ ले लिया, right? They say that demand factors are also responsible for inflation, supply factors are also responsible for inflation, and they in interaction with each other they work together. वो एक साथ काम करते हैं inflation को generate करने के लिए, right? Like for example, next हम करते हैं interaction between demand pull and cost push factors. They interact together and generate inflation generate करते हैं. Like for example, अब हम इसको ले लें aggregate. This is our aggregate supply curve, right? And this y0 is the level of full employment. Suppose this is, अगर हम full employment पे ही ले रहे हैं equilibrium को, suppose this is aggregate demand curve. ये हमारे पास aggregate demand curve आ गया, right? Now suppose initially let us take this thing that suppose because of any supply side factor, किसी supply side factor की वजह से, like for example due to increase in profit rates or because of increase in wages की increase की वजह से जो हमारा aggregate supply curve है वो इस तरीके से downward upward direction में shift हो गया, right? Because of this what has happened, the output will reduce from y0 to y1. जो output है वो y0 से y1 हो गया, right? And we can see the level of equilibrium
will shift from point E to point K. point E से point K पे increase हो गया, and because of this increase, इस increase की वजह से there will be increase in prices. prices जो थे, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं, prices will increase from P0 to P1. चलो हम ये एग्जांपल लेते हैं कि सपोज प्रॉफिट जो है, ड्यू टू प्रॉफिट पुश की वजह से देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रॉफिट, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम AS1 to AS2, due to which output has reduced from Y0 to Y1 and prices has increased from P0 to P1. जब prices P0 से P1 increase होंगे, then because of that what will happen, real wages in the economy will fall. ऐसा होगा? Yes, ma'am. When real wages in the economy will fall, then trade unions will make the pressure on the managements to increase the level of wages को increase करने के लिए pressure डालेंगी. Yes, ma'am. Due to this, money wages in the economy will start increasing, and when wages in the economy will start increasing, then aggregate demand, जो aggregate demand है, it will shift in the upward direction. ये aggregate demand upward direction में shift हो जाएगी AD to AD1, and we can see जो equilibrium level पहले E पे था, E से फिर K पे गया, और K से ये R point पे आ गया. So again output has increased from Y1 to Y0 because of increase in the aggregate demand, but increase in prices is continuous. It is earlier it was P0, now because of the supply side factor it has become P1, and now because of the demand side factors it has increased to P2. ये P2 पे चला गया, right? So ultimately prices had increased from P0 to P2, and this has happened because of both aggregate supply and aggregate demand factors. Is that clear? Yes. Right? So we call it wage spiral. हम इसको wage spiral कहते हैं. अब जब money wages increase होंगी तो तुम देखोगे aggregate supply जो है वो further upward direction में जाएगा, and जब aggregate supply further upward direction में जाएगा, again there will be a pressure to increase the wages in the economy, then again aggregate demand will increase. This type of a wage spiral will keep on working in the economy, and due to this the problem of inflation due to aggregate demand and aggregate supply factors emerges in the economy में emerge करती है. So this was the modern theory, and modern theory says that both the factors are responsible for creating inflation in the economy, and these type of inflation can be due to real factors, it can be due to monetary factors, even it can be due to structural factors also. Structural rigidities की वजह से भी हो सकता है. So any of the factors can be responsible for increasing prices in the economy. They work from either from demand side or from supply side. So this was our modern theory of inflation. Right? हम ये हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला लिया, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ये सेम इफेक्ट देखेंगे तो भी ऐसे ही वर्क करेगा. फुल एम्प्लॉयमेंट से अगर हम डायग्राम ये चलो ये तुम डायग्राम बना के देखना और मुझे बताना कि क्या फर्क आ रहा है. तुम्हें डायग्राम शो कर देगा जब तुम बनाओगे. ओके राइट, इसको ट्राई करके देखना.